Today I am going to discuss one of the very most important concept of Gauss theorem. Here we will see the application of Gauss theorem. This is also CBSE 2018 question. In this question you have to find the electric field due to a line of charge. Suppose a positive charge is distributed throughout a line. सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण तो आपने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डिस्टेंस पे E is equal to kq/r². But here the charges is distributed throughout the length. So in this term you cannot use single formula, that is here also r is q charge is there, here also one charge, so you cannot use directly this formula in this way. So you have to use the concept of linear charge density and Gaussian surface. Okay, Gaussian surface is an arbitrary surface which is formed in such a way that the electric field is constant throughout that Gaussian surface. In simple word you can see here this is positive charge. आपको यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप क्या करोगे, r डिस्टेंस पे, ठीक है, r डिस्टेंस पे आप क्या कर दोगे, Gaussian सरफेस बना दोगे. तो अगर इस पर चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, देन व्हाट इज द Gaussian सरफेस. इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब होता है दिस डिस्टेंस इज वेरी लेस कंपेयर टू दिस डिस्टेंस. इनफाइनाइटली लार्ज का मतलब ये नहीं होता इनफाइनाइट तक. Okay, very important. And in case of linear charge, in case of if any charge is distributed uniformly throughout the length, you have to use the concept of linear charge density, that is lambda. And the formula for linear charge density, you know, lambda is represented by charge per unit length. Okay, so I made one Gaussian surface. This is Gaussian surface. In this Gaussian surface द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है यहाँ भी r डिस्टेंस में 10 ही होने वाला है. एवरीवेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट द गॉसियन सरफेस इज 0. यहाँ r डिस्टेंस पे 10 है तो पूरा r डिस्टेंस में कितना होने वाला है, 10. पूरे इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 10. तो हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे. इतना क्यों नहीं बनाए, इतना ही बनाए गॉसियन सरफेस, बताएंगे इसका कारण. The length of the Gaussian cylinder is L. This is Gaussian cylinder. Gaussian surface हम ऐसा बनाते हैं जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट. ठीक है, तो एक सिलेंडर हमने बना दिया. Now the very important thing is you have to write in this way. This is 3 marks question. So you have to write this way. Consider a infinitely long thin wire charged positively having linear charge density lambda. This is infinite length, means the length of this radius, the point where we have to find the electric field. Suppose this point is P. Here we have to find the electric field. This distance is very less compared to the length of this wire. Now only one single formula you have to use to derive this equation. Okay, so only one single formula for finding the electric field. सिंगल पॉइंट चार्ज से तो आप जानते थे, अगर सिंगल पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ आर पे निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, के क्यू मॉडुलस ऑफ क्यू अपॉन दैट इज सोर्स चार्ज अपॉन आर स्क्वायर. Here you cannot use single charge. This is a distribution of charge. So you have to use the concept of Gauss theorem. और Gauss theorem का जब आप use करोगे, you have to form a Gaussian surface which is where the electric field is what? Electric field is always constant. So first of all you have to write all this thing, then you have to do the derivation. This is 3 mark derivation. Many times it came in the examination. Okay, this is CBSE 2018. So the main formula for using to finding electric field is this. This is cyclic integral of electric field along the Gaussian surface. This is ds is Gaussian surface. Okay, small Gaussian surface. This is the formula for flux. Flux is straight line. This is cyclic integral total surface integral. Okay, a dot b is ab cos theta, and this flux is equal to from Gauss theorem q by epsilon naught, charge enclosed that surface. Now we will do the derivation. Okay, now you see here if you use this formula. Okay, so how many surface are there? You see there are 3 surface. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर है, कितने सरफेस होंगे, मान लो मैंने इस पार्ट को ऐसे उठाया, यहाँ रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकल रही है, ये गॉसियन सरफेस है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन सीधी, और ये पार्ट जो है कर्व पार्ट है, इसकी एरिया क्या होगी, एरिया वेक्टर छोटा सा बाहर. सो व्हाट इज द एंगल, दिस इज कर्व पार्ट, दिस इज फ्लैट पार्ट. फ्लैट पार्ट समझ में आ रहा है आपको, ये कर्व पार्ट, ऊपर वाला फ्लैट पार्ट,
नीचे वाला भी फ्लैट पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये एरिया वेक्टर नीचे आएगा इस तरह से, ठीक है। सो इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर एंड द एरिया वेक्टर इज हियर, सो एंगल इज 90 डिग्री। सेम flat part having angle is how much? 90 degree. Okay, theta is 90 degree. But curved part, so flux will be from, we can write E dot ds vector is equal to E ds. This is total surface due to closed path. This is around curved surface, that is E ds cos 0 degree plus 0 plus 0. What is the meaning of plus 0 plus 0? Means cyclic integral. मैंने डायरेक्ट 0 क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने 0 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ एंगल 90 डिग्री है, cos 90 0 होगा। ये टर्म अगर आप आगे 2 के लिए लिखोगे, फ्लैट सरफेस के लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, cyclic integral of flat surface plus cyclic integral of flat surface. Total there are 3 surface. This is curved surface. ओके, चार्ज ऐसा, ये कर्व सरफेस हुआ, दिस वन इज फ्लैट सरफेस, दिस वन इज फ्लैट सरफेस। फॉर दिस फ्लैट सरफेस द एरिया वेक्टर इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज तो इन दिस डायरेक्शन, तो एंगल इज 90 डिग्री। व्हेनेवर द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेनेवर द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, एंड द एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री, दैट टाइम यू डायरेक्टली टेक द फ्लक्स फॉर्म बिटवीन देम formed by them is 0. So you can directly use 0 0. Now curved part, electric field is constant, so you can take out. So here what is, here flux, you can write this is flux, simple, this is flux is equal to cyclic integral of ds. So what is the cyclic integral? This is cyclic integral of this curved part. So if you integrate this, ये curved part को अगर तुम integrate करोगे, मतलब लाइन चार्ज है, ये curved path है, इस पार्ट को तुम इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या होगा, 2 पाई आर, बिकॉज द रेडियस एट पॉइंट पी, आर इज द रेडियस वेयर यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आर आपको लेना है, तो इसका क्या हो जाएगा, ई, ओके, ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एल, तो मैंने ये एल लिया, एल इज द स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, या गॉसियन सिलेंडर भी बोल सकते हो, हमने गॉसियन सिलेंडर बनाया है, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, this is equal to q by epsilon naught because this is flux. So you can find this E. Why you are taking E outside? Because here you can see everywhere in this distance, electric field is same, here also same, here also same, everywhere electric field is same, because we are taking the total charge is q, because we are taking the same distance, that is radial distance. That's why electric field is constant. So what is the formula for electric field? Electric field is equal to q by epsilon naught 2 pi r l. Now what is this q in terms of linear charge density? Q is how much, you tell me? Q is equal to lambda is equal to q by l होता है, okay, lambda is equal to q by l. Then what is q? Q is equal to lambda into l. So you can use lambda into l by epsilon naught 2 pi r l. This l will cancel and electric field is equal to, this is in scalar form, 2 pi r. So electric field is inversely proportional to distance. This is 2 pi r, okay, lambda upon, this is the formula for electric field, expression for electric field due to line of charge, infinite line of charge. So electric field is inversely proportional to r. Here you can see in vector form, if you want to represent electric field vector, if you want to, so you have to multiply one area vector, that is 2 pi r n cap. What is the direction of n cap? Outward, okay, n cap is outward direction, radial direction, n1 is, n cap is radial direction, outward. So this is the expression for electric field. This is in scalar form, this is in vector form. Many time question will come from this section, okay. Thank you.